Good morning to all. Today our first class. So we have to read about chapter 1, that is sets. Okay. So आज आमर first class. So हम पढ़िबा chapter 1, that is set. Okay pile. Then in everyday life we often speak of collection of object of a particular kind. Okay. आमर everyday life रे आमे कोन करूचे गोटे कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विषय किछि कथा होची. ओके. सो स्पीक ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट आमे कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विषय कथा होची जेमति कि सच एज ए पैक ऑफ कार्ड्स, ए क्राउड ऑफ पीपल, ए क्रिकेट टीम एसेट्रा. ओके. सो आमे ए विषय कथा जे तमे जानिथिबो ए पैक ऑफ कार्ड, ए क्राउड ऑफ पीपल, a cricket team, a football team. Okay. So that collection को आमे कहिबा गोटे set. Okay. Similarly in mathematics also we come across collection. Okay. Similarly in mathematics we come across collection. For example, set of natural numbers, set of points, set of prime numbers, also set of or natural number etc. Okay. So आमे पढ़ले किछ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को आमे कहिबा सेट. गोटे कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जेमिति कि ए पैक ऑफ कार्ड्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर ताको आमे कहिबा कोन कहिबा सेट कहिबा. सो आमे डेफिनेशन को जिबा एबे. देखो डेफिनेशन कोन अछि बुझी पालो. कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को आमे कहिबा सेट माने किसी ऑब्जेक्ट गुडा को कलेक्शन करबा. ऑब्जेक्ट कोन होला कार्ड्स, पैक ऑफ कार्ड्स अछि. सो कार्ड्स गुडा कहला ऑब्जेक्ट. जेमिति कि मैथ रे आमे कहिबा सेट ऑफ नेचुरल नंबर. सो 1 2 3 4 आर आवर ऑब्जेक्ट्स एंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट. ओके. सो आमे डेफिनेशन को जिबा एबे. देखो देखो चैप्टर 1 सेट्स डेफिनेशन देखो कोन अछि. A set is a well defined collection of objects. Okay. गोटे set होची well defined collection of object. Okay. well defined collection of object means well defined जोटा कि define हे पारुथिबो, जोटा को हमें define करि पारथिबा ताको हमें कहबा कोन कहबा set कहबा. Okay. So just example देखो. The rivers of India. जितरा रिवर अछि सब रिवर को हमें जदी गोटे सेट नहीं जिबा सेटा कोन हो माने कलेक्शन करिबा ताको सेटा कोन हो गोटे सेट हो. ओके. देन नेक्स्ट एग्जांपल अछि द vowels in English alphabet namely a e i o u. ओके. द vowels in English alphabet एटा में मध्य गोटे सेट हो जोटा कि हम कोन अछि a e i o u. दिस इज आल्सो ए सेट. नेक्स्ट एग्जांपल अछि odd numbers less than 10. ओके. odd number नबा जोटा कि less than 10 होतिबो. that is 1 3 5 7 9. less than 10 कहिछि माने कोन अछि 1 3 5 7 9. सो एटा odd number अछि. देखो 1 3 1 odd 3 odd also odd 5 7 9 or odd number. so odd numbers less than 10 that is 1 3 5 7 9. ओके. बुझियला. नेक्स्ट अछि हमर देखो sets are usually denoted by capital letters. ओके. सेट को यूजुअली हमें कोन डिनोट करबा कैपिटल लेटर रे जेमिति कि a b c x y z एसेट्रा माने कैपिटल है कैपिटल b कैपिटल c. ओके. नेक्स्ट अछि देखो the elements of a set represented by small letters like a, small b, small c, small x, small y, small z. तातो द एलिमेंट ऑफ ए सेट हम कोन अछि एलिमेंट्स. ए जो ऑब्जेक्ट जोटा हमर एलिमेंट सेटा एलिमेंट कहबा ऑब्जेक्ट कहबा ताको हमें ऑब्जेक्ट जहा सेटा एलिमेंट. सो जो ऑब्जेक्ट गुडा को नै कि हमें कलेक्ट करथिबा सेही ऑब्जेक्ट को हमें कहबा एठी एलिमेंट. सो द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर. यूजुअली हमें स्मॉल लेटर डिनोट करबा जेमति कि a b c x y z etc. ओके. ओके. एलिमेंट्स जगह में मेंबर भी कहि परिबा ऑब्जेक्ट जहा
एलिमेंट से मेंबर भी से ओके सो नेक्स्ट अच्छी देखो इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए सेट ए इफ a is an element of a set A then we say that A belongs to A small a belongs to capital A and it is denoted by the symbol epsilon okay एटा हम पढ़िबा epsilon देखो कोन अछि if A is an elements of a set A A हला हमर गोटे कहार एलिमेंट कैपिटल ए रो एलिमेंट then we say that A belongs to A okay okay it is denoted by the symbol epsilon एटा को हम कहिबा epsilon स्पेलिंग देखो EPSILON एटा हला epsilon that is A belongs to A एटा को हम पढ़ कहबा एटा हमरो epsilon किंतु आमे पढ़िबा A belongs to A small a belongs to capital A epsilon meaning means la belongs to okay then if B is not an element of a set A then if B is not an element of a set A then we write B does not belongs to A इटा को हम पढ़िबा does not belongs to and read as B does not belongs to A okay तार्थ A जदि element of A होबो then we can write A belongs to A and if B is not an element of a set A B हला जदि element नुहे then ताको हमें कोन लिखिबा B does not belongs to A ओके एलिमेंट हेतिले कोन लिखिबा A belongs to A एलिमेंट हे नथिले B does not belongs to A ओके सो एग्जांपल देखिबा ए एग्जांपल if V is the set of vowels in the English alphabet okay V hela set of vowels in the English alphabet then we can write A belongs to V but B does not belongs to V because V hela vowels रे हमर कोन अछि एलिमेंट गुडको एट लिखितले A E I O U then if V is the set of vowels then we can write A belongs to V also we can write E belongs to V also I belongs to V also O belongs to V and U belongs to V but B does not belongs to V and C also does not belongs to V because C is not a vowel okay so जोटा एलिमेंट हेतिबो then we can write A belongs to V and element हे नथिले B does not belongs to V C also does not belongs to V because C is not a vowel D does not belongs to V B also not a vowel so B does not belongs to V D भी लिखिबा does not belongs to V next example अछि देखो in the set of prime factors of 30 कौन कहछि in the set of prime factors of 30 रो फैक्टर कोटा कोटा 1 2 3 5 6 then 10 15 and 30 are the factor of 30 but हमको ये कौन कही इन द सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 सो प्राइम फैक्टर मीन्स फैक्टर हेतिबो आल्सो प्राइम हेतिबो देन 3 इज ए प्राइम नंबर सो वी कैन राइट 3 बिलोंग्स टू P and 3 is the factor of 30 factor also prime factor but 15 does not belongs to P because 15 is not an prime factor not a prime factor देखो 15 is a factor but not a prime factor so we can write 15 does not belongs to P or 3 belongs to P then 2 asle kon hobo 2 also belongs to P because 2 is a factor of 30 and 2 is also prime number then
2 इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ 30 ओके फास्ट तुम 30 रो फैक्टर बाहर कर देबो कोटा प्राइम अछि सेटा लिखिबो बिलोंग्स टू पी आउ जोटा प्राइम नथिबो सेटा डज नॉट बिलोंग्स टू पी ओके